in which we had, in the last lecture we had studied about the six pricing policies or six pricing strategies, in which we had seen one is about cost plus pricing, then marginal pricing, that also we had studied, then cyclical pricing, that also we had studied, then penetration pricing, then price leadership, then we had seen about the price scheming, and the last one was about transfer pricing. So these are the pricing policies that organization has to decide whenever they wanted to sell the product into the market. At that time there are so many parameters like market conditions, then competition, then nature of your product, as well as what kind of leadership you have hold, that these are affect that. So transfer pricing is the last pricing strategies that we had seen in the hurry. But transfer pricing means what? Whenever one sub unit of one organization is sending goods and services to other sub unit or other subsidiaries of the same organization, at that time what will be the price? The price may be less than or equal to market price. Getting this? So the way in which, or the rate at which the product is selling out in the market, at the same rate we can charge, the same rate we can charge to my subsidiaries, or the rate may be less than that. Getting this? So as a subsidiary or as a component of one organization, as a unit of one corporate head, I can't charge more price on my subsidiaries. Getting this? Because if I charge more price on my subsidiaries, then what will happen? The profitability of that sub unit will decrease. So automatically overall profitability of my that particular brand will decrease. That's why the price should be a fair price, that we had seen in the last lecture. Now let us go for next is the perfect competition. What is meant by perfect competition? So perfect competition is the competition where it occurs when all companies are selling similar kind of product. For example, we can say take the example of sugar industries. We can take the example of shoes, then textiles, then any kind of oils, where so many products, so many companies are manufacturing similar kind of products. Getting this? So identical products are there, and there are no that much differences in the products, as well as profit will be virtually non-existence due to aggressive competition. In case of perfect competition, so many players are making similar product whose qualities are also similar, whose features are also similar. That's why consumer have consumer have lot of option to prefer the brand. So if we in perfect competition, if we increase the price of product, automatically consumer will get aware about this price, and he will move towards other product of the other brand whose prices are less. Getting this? So in this way, perfect combination is the type of market structure where products are homogeneous. Homogeneous means similar products we are manufacturing, and there are many buyers and sellers. Means for identical जो products होते हैं, similar kinds of products होते हैं, in that case we can't raise the prices of product. As a manufacturer, the prices of products will be decided by the market. जैसे कि हम लोगों ने ओलिगोपोली में देखा, मोनोपोली में देखा था, मैन्युफैक्चरर वाज डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. बट परफेक्ट कंपटीशन में मैन्युफैक्चरर हैज नॉट अ राइट to decide the price of the product. Who will decide? Consumer or the customer will decide the price, because customer is going to have lots of options. Customer के पास बहुत option है. So I can't force to the customers to purchase the product. So what are the characteristics of perfect competition? First one is that there are large numbers of buyers and sellers. जितने भी buyers है उतने भी वहां पे sellers है. Means what? Customer has lots of options. जैसे कि ओलिगोपोली में एक ही बंदा था, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था और सारे लोगों को, सारे मार्केट को सप्लाई कर रहा था. मोनोपोली में भी यही था. मोनोपोली में भी ये एक या दो आदमी वही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहे थे, और सारे मार्केट को वही सप्लाई कर रहे थे. लेकिन यहाँ पे क्या है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आर अवेलेबल and large number of buyers are also available. Getting this?
So as a manufacturer, I can't impose restrictions to the customer to buy my product, or price. I can't, if I make the fluctuations in the price, automatically it will reflect into the market, and people will move towards my away from my product, so that I don't have authority to change the price of the product. So price will be decided by entire market, and I have to adjust the price, because price product is homogeneous yani similar kind of products. There are no differences in the within the product, like rice, or you can take the example of automobile industries as well, products. Getting this? As well as there is free entry and exit for the firms. So who wanted to enter into that that particular sector, they can enter. अगर जिसको नई business करना है वो बाहर भी जा सकते हैं. This is the form of perfect competition. पहला buyer and seller बहुत numbers पे होते हैं, product में similarities होती है, market entry और exit में कुछ barriers नहीं है, and zero advertisement costing. There is no need to make the advertisement of product. Just what you have to do, you have to sell the product into the market, you have to just enter into the market. Okay, next, consumer have perfect knowledge about the market and are well aware about the any changes in the market. So consumer has know about the what is the product of the, what is the price of the product, as well as what is the cost of the product. So I can't increase the price of product because consumer is already aware. इसी ब्रांड का वैल्यू मार्केट में कितना हो सकता है, उसका हर टाइम कंज्यूमर क्या करता है, एनालिसिस करके बाय करता है. Then all the factors of production like labors, capital, then machinery have perfect mobility in the market and are not slowed down by the market factors or the market forces. Means whatever are the factors required, that is the capital, labor, machineries, or your plant have perfect mobility. Means what, whenever we will adjust it, means what, I have uh, scope to increase the labors or to increase the labor or to decrease the labor, यानी कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी. With respect to your supply and demand, I can adjust my labors, I can adjust my capital, and I can adjust my resources as well, and it is possible. अगर मार्केट में डिमांड नहीं है, अगर सप्लाई अगर हम लोगों को कम करना है, तो वी कैन प्रोड्यूस लेस. अगर मार्केट में सप्लाई आया, मार्केट में डिमांड आ गई, तो वी कैन प्रोड्यूस मोर. सो अकॉर्डिंगली वी कैन अरेंज द रिसोर्सेस, एंड इट इज पॉसिबल इन परफेक्ट कंपटीशन. Then government is not going to make any intervention in between the prices and in between the entry. Government का कुछ भी rules and regulations नहीं होते हैं perfect competition में. And no transportation cost or approximate little bit transportation cost is there. Wherever you are producing, in the same area you are selling the product. Means what, there is no transportation cost is available, because customers are also from the same place and you are also manufacturing into the same place. Then each firm has a normal profit. देखिए, अगर प्राइस बढ़ाई तो क्या हो जाएगा, मेरा कस्टमर दूसरे कॉम्पिटिटर के पास जाएगा. That's why I can charge very little bit margin. That's why my profit will be very less, or we will enjoy only normal profit. I can't earn the super normal profit. Super normal profit means extra profit. जैसे कि मोनोपोली में या ओलिगोपोली में जो जैसे कि ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, प्राइस स्कीमिंग में भी हम लोग ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, वो ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होता. देन एवरी फर्म इज द प्राइस टेकर. प्राइस टेकर यानी जितना भी कस्टमर पे करेगा, उतना जितना भी रेट मार्केट का कस्टमर डिसाइड करेगा, उसी रेट से हम लोगों को प्रोडक्ट सेल आउट करने. So that firm will be considered as a price taker. प्राइस लेने वाला है, प्राइस डिसाइड करने वाला अपॉर्चुनिटी फर्म को नहीं. And no firm can influence the price of product. कोई भी कंपनी प्राइस के प्रोडक्ट के प्राइसेस के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट में और मेरे कॉम्पिटिटर्स जितने भी कॉम्पिटिटर्स रहेंगे, उनके प्रोडक्ट में कोई भी फर्क नहीं. So in case of identical products, similar products, if they are available into the market at that time, this is the nature of perfect competition. Okay, now, so what is the price output relationship between the under perfect competition?
अभी प्राइस आउटपुट रिलेशन क्या है देखिए, the market price and output is determined on the basis of consumer demand and supply. So as per the supply, as per the consumer demand, I can adjust my output. I can adjust my supply. Getting this? So under perfect combination, what will happen? Because there is the market is too much flexible. Market is too much flexible. So there is the elasticity in the demand and supply. That's why I can adjust my output with respect to my consumer demand. जितना भी demand हो जाएगा उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, मेरा production level vary करेंगे. Then firms and industry should be in equilibrium at the price level in which quantity demanded is equal to quantity supply. हम लोगों को क्या करना चाहिए? In that case, we have to have equilibrium position. Equilibrium position means what? जितना market का demand है उतना ही manufacturing करके supply करना. So there will be no shortage of demand and there will be no excess of supply into the market. अगर excess supply हो गया तो क्या हो जाएगा? Demand और भी कम हो जाएगा. Demand कम होने से prices मुझे selling price कम करनी पड़ेगी. That's why each and every firm has to achieve the equilibrium position. Equilibrium position यानी supply जितना available है, sorry, demand जितनी requirement है उतना ही supply market में करूँगा. That time you will get the good price. Okay, so that in under perfect competition, your firm has to achieve the equilibrium position. Equilibrium position means what? Total demand is equal to total supply. उतना ही होना चाहिए. ज़्यादा excess supply or shortage of supply should not be happen there. They make maximum profit if firm and industry are in equilibrium. अगर हम लोग equilibrium position, हमारा equilibrium position achieve करते हैं, then and then we will have a maximum profit. So demand under perfect competition. तो demand कैसे vary होता है perfect competition में? The consumer demands more quantity at lower price. If I decrease the price at that time, I will purchase more. For example, अगर पेट्रोल के प्राइसेस कम कर दे तो क्या हो जाएगा? मैं 1 लीटर भरने वाला था, अभी मैं 2 लीटर भरूँ. Getting this means what? I can increase my quantity. Consumer can increase his quantity if lower is the price. So this and if I increase the prices of the product at that time, consumer consume less. तो कंज्यूमर का जो डिमांड पैटर्न है वो सेल से या प्राइस से रिलेटेड है. प्राइस अगर बढ़ाया तो उससे कम करेगा, डिमांड कम हो जाएगी. प्राइस अगर कम किया तो डिमांड बढ़ेगी. सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस आई शुड हैव टू फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन. सो डिमांड वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट प्राइसेस. प्राइस अगर वेरी किया तो मेरा डिमांड चेंज होता है. दैट इज द डिमांड अंडर परफेक्ट कंपटीशन. और सप्लाई क्या होता है देखिए, supply under perfect competition, supply of product increases high price and decreases at low price. When prices has been increased into the market, at that time manufacturing firms will make excess supply, increases their supply. Firms increases their supply at highest price and firms decreases their supply at lowest price. अगर प्राइस बढ़ गई, कम मार्केट का प्राइस बढ़ गया तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? ज्यादा सप्लाई करेगा मार्केट. अगर प्राइसेस कम कर गई तो कम हो गई तो क्या करेगा? सप्लाई लेस डिक्रीज करेगा. सो दिस इज द डिमांड इन परफेक्ट कंपटीशन एंड सप्लाई इन परफेक्ट कंपटीशन. डिमांड कैसे होता है? प्राइस बढ़ गई, डिमांड कम हो गया, प्राइस बढ़ गई, डिमांड बढ़ेगा. अगर प्राइस कम हो गई, डिमांड मेरा कम हो. तो इन दिस वे वी हैव टू डू. एंड सप्लाई में क्या हो जाएगा? प्राइस बढ़ गई, सप्लाई ज्यादा होगा, प्राइस कम होगी, सप्लाई कम होगा. सो दिस इज द रिलेशन, प्राइस एंड आउटपुट रिलेशनशिप between perfect competition. Then just look towards the equilibrium price output determination. Now 1 minute. Yes. So in this table I have shown the first column is about price, second is the quantity demanded, third is the quantity supplied, and what are the conditions is the last column. So I am increasing price of quantities or market price is 2 rupees, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So quantity demanded, just look towards quantity demanded at price 2 rupees. It was quantity demanded was 90. Because price is less initially,
That's why there is huge market demand to your product. If I increase the price to rupees 3, that time quantity demanded goes to the 80 rupees. Again, if I increase the price of 4 rupees, at that time quantity demanded is again decreasing at 70 rupees. Then if I increase the price of 5 rupees, at that time it becomes 60. At rupees 6, 50, 7, 40, 80, 30. Means what? As price of the product increases, quantity demanded is decreasing slowly. This is the price and quantity relation. And what is the relationship between price and quantity? Supply और price में demand क्या है देखिए. So if we increase price of rupees 2, that time quantity demanded is 90, but quantity supplied was 30 only. Okay, at that time what is happening? Just look at the condition where quantity demanded is 90 and quantity supplies is 30. Means what? Demand is greater than supply. Getting this? After that, at price 3 rupees, quantity demanded is 80 and price demand ज्यादा होने से मैं क्या करूंगा? I will increase more supply. So I will increase the supply. So total supply will become 40. Where also 80 is greater than 40 means what? Demand is greater than supply. After that, at rupees 4, quantity demanded is 70 and quantity supply is again increasing because demand is decreasing, price is increasing. At rupees 4, demand is decreasing but price is increasing. 4 rupees को price बढ़ रही है और demand कम हो रही है. So at rupees 4, quantity demanded is 70 and price is 50. Again, demand is more than your supply. That is, D is greater than supply. But see, at rupees 5, quantity demanded has decreased, but at the same time, quantity supplied has increased because price is increased. प्राइस और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन होता है और प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन. So at rupees 5, quantity demanded is 60 and quantity supply is 60. So where 60 is equal to 60 means what? Demand is equal to supply. That is my equilibrium position. Getting this? Then if I increase the price to 6 rupees, at that time demand is 50 and supply is 70. Means what? Demand is less than your supply. Means what? Supply is excess into the market. Getting this? The condition is what? D is less than S. Means what? Demand is less than your supply. Supply से demand ज्यादा है. इसका मतलब क्या है? Supply is excess into the market. Supply अगर ज्यादा हुआ तो क्या होता है? Automatically demand कम होता है. Getting this? So out at rupees 7, quantity demanded become 40 and quantity supply become 80. Means what? जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे मेरा नंबर ऑफ सप्लाई बढ़ेगा बट डिमांड वैसे भी कम हो जाएगा due to increase in the prices. So this is the equilibrium point. So in this point, equilibrium point is price at rupees 5, quantity demanded will be 60, quantity supply will be 60 and condition will be demand is equal to supply. तो ये पोजीशन जो रहेगी उसी को क्या बोलेंगे? प्राइस आउटपुट और इक्विलिब्रियम एट परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम पॉइंट कितना है? 5. क्वांटिटी इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ डिमांड इज 60 and equilibrium point of supply is equal to again 60. So this is how we can achieve equilibrium point at perfect competition. Is it clear to you all? Yes, sir. Okay. Now the same thing I have shown with the help of graph. देखिए, on x axis I have taken quantity, on y axis I have taken the prices, and with respect to prices demand is showing negative curve and supply is showing positive curve. D1 is the D1 or D dash is the demand curve and S dash is the supply curve. Okay, so P is the point. P is the point which is called as a equilibrium point. P is the equilibrium point. Just look towards OP1. OP1 is the price where supply is more at this point. 1 minute.
So at this point, OP1, at this point, just see your supply is how much? This much is your supply. Okay. And quantity demanded कितना है देखिए at this point, this much. Means what? This will be your excess supply. Try to understand. So at OP1 where price is highest, at that time automatically supply will be higher. कितना supply हो रहा है market में? इतना supply हो रहा है, इतना supply हो रहा है market में, लेकिन demand कितने का है? इतना ही रहेगा. Means what? This amount of supply is excess into the market. तो अगर supply excess हो गया तो क्या हो जाता है? Prices कम हो सकती है. Prices will be fall. And these prices will fall up to कितने प्राइस तक नीचे आ जाएगी प्राइस? Equilibrium point, that is the P1, P तक आ जाएगी. Therefore price will fall down up to OP तक नीचे आ जाएंगी. Similarly अगर इसका उल्टा हो गया at price OP2 पे क्या है देखिए, मेरा प्राइस इतना है, इतना है. ओके. At OP2 डिमांड इज मोर देन योर सप्लाई. आप लोग कितना सप्लाई कर रहे हैं? इतना ही सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन डिमांड कितना है? इतना है. गेटिंग दिस? सो एट OP2 डिमांड इज मोर एंड एट OP1 सप्लाई इज मोर. इफ सप्लाई ज्यादा होता है तो क्या होते हैं? प्राइसेस नीचे आते हैं. एंड सप्लाई अगर डिमांड ज्यादा हो गया तो क्या होता है? प्राइसेस ऊपर जाते हैं. सो एट दैट टाइम देयर विल बी इंक्रीज इन द प्राइसेस. अगर डिमांड ज्यादा हो गया, सप्लाई कम पड़ गया तो क्या हो जाएगा? देयर विल बी इंक्रीज इन द प्राइसेस. तो डिमांड इज मोर देन सप्लाई. सिमिलरली इन सच केस प्राइसेस विल राइज अप टू OP. तो ये प्राइसेस ऊपर जाएंगे. ओके. सो E is the point. E is the point. That point is called as equilibrium. At this equilibrium, OP is the your price and quantity is OQ. So OQ is the number of quantity and OP is the price of the product. So in this way, I have to decide the price output relationship between under perfect competition. In perfect competition, we have to find the equilibrium position. Okay. So this is something about price output relationship between under perfect competition. Okay. 1 minute. Understood this? So with the help of table as well as with the help of graph, we have explained over here. अगर सप्लाई ज्यादा हो गया तो क्या होता है? प्राइसेस कम होती है, प्रोडक्ट्स की प्राइसेस नीचे आती है, बिकॉज डिमांड इज नॉट दैट मच. डिमांड सप्लाई अगर डिमांड से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? प्राइसेस मस्ट बी डिक्रीज. एंड सप्लाई इज लेस देन डिमांड हो जाएगा तो दैट टाइम प्राइसेस मस्ट बी इंक्रीज्ड. सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ द मार्केट. दैट्स व्हाई we have to find the equilibrium position. Okay. Now next is the short run industry equilibrium under perfect competition. अगर perfect competition में short run industry equilibrium कैसे अचीव करते हैं? Now we have seen what is meant by equilibrium. अभी short run industry equilibrium इसका मतलब for a short period of time how we are going to find our equilibrium. So if a firm is in equilibrium in short run यानी the period is less than 1 year or equal to 1 year. So organization will find the period which is up to 1 year or less than 1 year अगर रहेगा तो in that case अगर मेरा product अगर seasonal product है, अगर मेरा product seasonal product है and I will be not stay in this market for more than 1 year. तभी अगर इसी टाइप का मैन्युफैक्चरर रहेगा तो how he can find his equilibrium position. Okay, just see. The firm is in equilibrium in short run when it has no tendency to expand or contract its output and wants to earn maximum profit or to incur maximum losses. So with respect to your supply, he is not going to change his output because he has certain kind of limitations in the resources. उसको मार्केट में 1 साल से ज्यादा रहना ही नहीं है, 1 साल के लिए बिजनेस कर. Try to understand. So I will just think about 1 year into the market. Means what? I am not thinking about the long term into the market. मैं ज्यादा दिन मार्केट में नहीं रहने वाला. My product is the seasonal product. I will be there into the market for few months. At that time, it is called as a short run business. So in that case, how to find out the equilibrium point?
तो इसी टाइम पे इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे अचीव करें। फर्म इज इन इक्विलिब्रियम इन द शॉर्ट रन व्हेन इट हैज नो टेंडेंसी, तो वो क्या कर रही है, मार्केट का डिमांड और मार्केट का सप्लाई की वजह से मेरा आउटपुट चेंज नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, firm will not expand the supply, expand the output as well as firm should not reduce the output। मेरा जो सप्लाई और डिमांड रहेगा वो, सॉरी, मेरा जो आउटपुट रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो स्टेबल रहेगा। मार्केट में ज्यादा सप्लाई हुआ इसलिए मार्केट में ज्यादा डिमांड हुआ इसलिए मैं मेरा एक्सपेंशन, मेरा आउटपुट बढ़ाऊंगा नहीं। अगर मार्केट में ज्यादा डिमांड, सप्लाई एक्सेस हुआ तब मैं मेरा आउटपुट कम नहीं करूंगा, यानी एक्सपांड भी नहीं करूंगा और कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करूंगा, कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं करूंगा। इट्स आउटपुट एंड वांट्स टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। आउटपुट वैरी नहीं करना है, आउटपुट जितना भी आपका लेवल है, नॉर्मल लेवल है, उतना ही मैन्युफैक्चरिंग करूंगा। एंड बाय मेकिंग दैट मच ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आई वांटेड टू अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट। जनरली क्या होता है, मार्केट में ज्यादा डिमांड रहेगी तो हम लोग ज्यादा सप्लाई करते हैं, ज्यादा सप्लाई करने के लिए ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। मार्केट में डिमांड कम होगी तो हम लोग क्या करते हैं, हम वी विल कॉन्ट्रैक्ट आवर आउटपुट, वी विल कॉन्ट्रैक्ट आवर फिनिश्ड गुड्स, हम लोग कम करेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये करना पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज यू आर देयर इन द मार्केट फॉर ओनली फ्यू मंथ्स। So at that time, the short run is the period of time in which the firm can vary its output by changing the variable factor of production. So in that case, what they will do, they will change the factor of production. Factor of production यानी resources जो कुछ है वो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे। Getting this? So in certain time, what will happen? We will again give the facility of overtime. अगर जहां पे जरूरी नहीं है तब हम लोग क्या कर सकते हैं, we will, so फर्म के जो प्राइसेस होते हैं, फर्म के यूनिट प्राइसेस होते हैं, so this will be reduces with the help of variable cost, so their variable cost affect more. The number of firms in the industry are fixed because neither the existing firms can leave or nor new firms can enter. So number of firms होते हैं ऑर्गेनाइजेशन उसी इंडस्ट्री में, उसी सेक्टर में, for short period of time they all are doing the business because this is the short term period. Try to understand short term industry equilibrium में क्या होता है, so period of time in which firm can vary output by changing the variable factor of production, जितने भी variable factor of production होते हैं वो ही adjust कर सकते हैं। तो fixed cost I will not adjust because fixed cost I have to bear. Okay, and number of firms and into the industries which are participating, these are fixed. जितने भी नंबर ऑफ प्लेयर्स मार्केट में होते हैं वो सारे फिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल assumptions क्या होते हैं फॉर शॉर्ट टर्म इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में, ऑल फर्म्स यूज द इक्विलिब्रियम होमोजेनियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो मेरे लिए जो सारे कंपनीज रहते हैं उनके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कैपिटल, लेबर, रिसोर्सेस, रॉ मटेरियल, उसके बाद आपके मशीनरीज, उसके बाद आपके एडवर्टीजमेंट, ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। ये सब कंपनी के सिमिलर ही होते हैं। होमोजेनियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी सिमिलर काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट इज देयर, देन फर्म्स आर डिफरेंट एफिशिएंसी। हर कोई कंपनी की एफिशिएंसी अलग है, हर कोई कंपनी की प्रोडक्टिविटी अलग है, हर कोई कंपनी की कैपेसिटी अलग अलग है, हर कोई कंपनी क्या कर रही है, अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी प्रोडक्शन कर रही है। देन कॉस्ट कर्व्स ऑफ फर्म वैरी फॉर फ्रॉम ईच अदर। हर एक का कॉस्ट फैक्टर, हर एक कंपनी की जो कॉस्ट आती है उसी प्रोडक्ट की वो सिमिलर नहीं होती, लेकिन मार्केट में डिमांड सेम होता है, प्राइस विल बी सेम बट कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल नॉट बी सेम। Then all firms sell their products at a same price determined by the demand and supply of the industry. तो जितने भी कंपनीज प्राइसेस, जितने भी कंपनीज प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं हर एक का प्राइस, हर एक का यानी मार्केट प्राइस इज द सेम। तो आई कांट इंक्रीज द प्राइस, आई कैन डिक्रीज द प्राइस, आई कांट डिक्रीज, आई कांट इंक्रीज द प्राइस बिकॉज प्राइस इज डिसाइडेड बाय द मार्केट। सो वेयर price becomes is equal to actual revenue equal to marginal revenue। कितना होता है, price is nothing but actual revenue is equal to margin। जितना भी आपको marginal revenue रहेगा
उतना ही आपका टोटल रेवेन्यू ही रहेगा, एंड दैट टोटल रेवेन्यू इज नथिंग बट योर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। एंड फर्म्स प्रोड्यूस एंड सेल डिफरेंट क्वांटिटीज। हर एक कंपनी की कैपेसिटी अलग अलग है, हर एक कंपनी की कॉस्ट अलग अलग है, हर एक कंपनी का एफिशिएंसी अलग अलग है, लेकिन सारे कंपनी सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। एंड ड्यू टू हैविंग सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्शंस and there is no that much product specifications, that's why entire market will decide the price, consumer will decide the price of the product, that's why there will be little bit revenue, there will be the little bit margin to your product. Okay, तो यहाँ पे क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स है, इसलिए हम लोगों को ज्यादा मार्जिन चार्ज करना पॉसिबल नहीं होता है। दैट्स व्हाई माय टोटल मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू योर एवरेज रेवेन्यू। Margin revenue is equal to average revenue, and that is nothing but your price. Now, now marginal cost revenue analysis. अभी marginal cost revenue analysis क्या होती है? Just first of this, see this graph. पहले ग्राफ को देखिए, उसके बाद हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. So see here. सो ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ हम लोग अभी एक्सप्लेन करेंगे. ओके, नाउ सी, यही ग्राफ का एक्सप्लेनेशन इधर से स्टार्ट होता है. ओके, सी तो मार्जिनल कॉस्ट हम लोगों ने क्या बोला कि शॉर्ट रन में हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू में कमा सकते हैं. वी कांट generate the super normal profit, we should have to generate only marginal profit. Marginal profit means what? This is the minimum profit that you have to achieve, because your products are homogeneous. After that, you can't charge more price into the market, that's why you have to do the marginal cost and marginal analysis. Marginal cost यानी कितना है, अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाया तो उसकी कॉस्ट कितनी आती है, बिकॉज फिक्स कॉस्ट इज गोइंग टू बी सेम. फिक्स कॉस्ट चेंज होने वाली नहीं एक साल में, गेटिंग दिस. बट व्हाट इज गोइंग टू चेंज, only marginal cost, only variable cost will be changing. In this case, what is the relationship between marginal cost and marginal revenue? How you can adjust the equilibrium point? So whenever you would like to adjust the equilibrium point, at that time I have to adjust it with my marginal cost, because I will also enjoy the marginal revenue. Marginal revenue means what? Minimum amount of revenue. You can't charge a super normal profit, you can't increase the price of the product, getting this, because there are so many competitors into the market, product is also homogeneous, so accordingly we need to adjust. So in that long short term period, how to adjust your price? During a short run, firm will produce only if its price equal to average variable cost. कितना price करेगी firm will produce if price is equal to average variable price or is higher than the average variable price. अगर variable cost इसकी प्राइस जो है, फर्म कब प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी, अगर उसकी प्राइस वेरिएबल कॉस्ट अगर उतना तो उसने रिकवरी करना चाहिए, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जितना भी वेरिएबल कॉस्ट है उसके एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस. सो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और हायर देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. मेरे प्रोडक्ट की प्राइस एक तो इक्वल टू एवरेज कॉस्ट रहना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट इज ऑलरेडी रिकवर्ड बाय यू इन द शॉर्ट रन. सो फिक्स कॉस्ट डजंट अफेक्ट ओवर इन शॉर्ट रन, getting this, because we are not going to change our machinery, we are not going to change our plant. एक साल के लिए प्लांट तो वही रहेगा, मशीनरी तो वही रहेगी, मेरे फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होंगे. लेकिन क्या चेंज होने वाली है, मेरी वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो ये तो कॉस्ट मुझे आने ही आने वाली है अगर मैन्युफैक्चरिंग किया तो ये कितनी होती है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज फॉर एग्जांपल 10 रुपीज, then cost of direct labor is 10 rupees, so 10 plus 10 20, and cost of
एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 40 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, मार्जिनल कॉस्ट 40 रुपीज। तो अगर मार्जिनल कॉस्ट 40 रुपीज है तो मैं प्राइस कितना लगाऊंगा, इक्वल टू एटलीस्ट 40 रुपए तो रिकवरी करूंगा या उससे ज्यादा 42 या 45 रुपीज करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड मार्जिनल कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस। इन दैट केस मार्जिनल रेवेन्यू कॉस्ट विल बी 42 रुपीज और 45 रुपीज, और मिनिमम कितना होगा, दैट इज द कितना कॉस्ट आया है आपको 40 रुपीज। 40 रुपीज कैसा आया, 10 rupees is the cost of production, that is variable cost. Then cost of labor is again variable cost. So 10 plus 10, 20 plus direct cost का expenses आ गया 20 rupees. So 10 plus 10 plus 20 is equal to 40 rupees. So 40 rupees will be my price of my product, or more than that, or more than that. This is the meaning of first statement. तो मेरी प्राइस इक्वल टू मार्जिनल प्राइस रहेगी, मार्जिनल कॉस्ट रहेगी, या उससे थोड़ा ज्यादा रहेगी। अगर ज्यादा मैंने प्राइस में वेरिएशन किया तो क्या हो जाएगा, माय कस्टमर विल मूव टुवर्ड्स कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। इफ द प्राइस इज मोर देन द एवरेज टोटल कॉस्ट, अगर प्राइस अगर ज्यादा हो गया, दैट इज द पी इज ग्रेटर देन और यूर एट इफ पी इज मोर देन यूर एवरेज टोटल कॉस्ट, okay. So at that time what will happen, P is equal to AR is greater than SAC, okay. Now at that time what will happen, the firm will earn the supernormal profit. अगर प्राइस अगर एवरेज टोटल कॉस्ट से ज्यादा होती है, एवरेज टोटल कॉस्ट से अगर ज्यादा होती है, at that time in short term period you have opportunity to generate the supernormal profit. तभी हम लोग अगर प्राइस ज्यादा, अगर 40 रुपए मेरा खर्चा हो गया, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट है, if I charge 60 rupees, at that time I have scope to earn the supernormal profit. Getting this? अगर price is equal to average total cost, अगर 40 रुपए प्राइस है, 40 रुपए मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, अगर 40 रुपए में 40 रुपए मैं प्राइस सेट करता हूँ, at that time you will be earning normal profit, और you will earn only break even. यानी जितना भी मेरा कॉस्ट किया है, कॉस्ट है, उतनी ही कॉस्ट में रिकवर कर रहा हूँ, मींस व्हाट, आई एम नॉट जनरेटिंग द प्रॉफिट। गेटिंग दिस? सो इफ प्राइस इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट मींस पी इज इक्वल टू AR और इज इक्वल टू SAC, ओके। एट दैट टाइम क्या हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट लेवल 0 हो जाएगा। इसका मतलब जितना भी मैंने कमाया, वो उतना कितना मैंने कमाया है, जितना मेरे कॉस्ट आई है, वेरिएबल कॉस्ट आई है, उतना ही मैंने कमाया। Means what, my all revenue will go to pay my cost. At that time I will not generate the profit, so my profitability level will be 0 and I will be at a break even point. Next, if price falls when little below the ABC, average variable cost से अगर हम लोग नीचे जाता है तो हम लोग क्या हो जाएगा, प्राइस नीचे आ जाएगी, and full firm will shut down. अगर means what, if price of product is 30 rupees and your cost of product is 40 rupees, अभी हम लोगों ने देखा कि 40 रुपए खर्चा है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने का, लेकिन मार्केट में मार्केट प्राइस कितनी होगी, 30 रुपीज। सो एट दैट टाइम देयर इज नो यूज टू मेक द मैन्युफैक्चरिंग। तो इसी केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, आई हैव टू क्लोज डाउन दिस माय बिजनेस बिकॉज प्राइस व्हिच इज सेट बाय द कस्टमर इज ₹30 और मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है 40 रुपए। इसका मतलब इफ आई प्रोड्यूस the units in the market, at that time I will be the loss of 10 rupees per product. At that time I will not manufacture more in short run, so I will shut down, because in order to produce it must cover at least average variable cost. तो अगर प्रोडक्शन मेरा कंटिन्यू रखना है तो मुझे कम से कम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवरी होना चाहिए। So during the short run, under the perfect competition, firm should be in equilibrium in all the above situations. तो सारे सिचुएशन में फर्म ने इक्विलिब्रियम पोजीशन लेना चाहिए। So firm has to adjust their production level with respect to demand into the market. Clear about this? So this is about the marginal cost and marginal revenue analysis. Okay, now see here, short run firm equilibrium under perfect competition क्या करना चाहिए? Just see here. 1 minute. Yes. So just look towards the graph, then we will discuss. So equilibrium of the firm in short run cost situation is called as
सो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म इन द शॉर्ट रन कॉस्ट सिचुएशन. So just see here, on x-axis I have taken the quantity Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, and on the x-axis I have taken the prices like P1, P2, P3, P4, P5, P6, P4, P6, and SMC, SAC, and AVC. Okay, so SMC is the short-term margin, short-term or short-run marginal cost. SAC is the short-run average cost, and AVC is the curve of average variable cost. So in this one graph, I have shown one graph. I have shown the behavior of three cost curves. One is the short-run marginal cost. Second is the short-run average cost, and next is the average variable cost. Okay, just look towards. So these three curves are intersecting with each other at various points. Okay, अभी देखिए SMC at E point, at E1 point, your quantity demanded will be Q1 and price demanded will be P1. So at that time, average revenue AR1 is equal to MR1. अगर E2 को टच होता है, which point? SMC is touching to the E2 at marginal point. At that time, just look towards AR1 is equal to MR. So AR2 is equal to MR2. Average revenue is equal to marginal. AR stands for average revenue, MR stands for marginal revenue. In the same manner, at P3, just see here, AR3 is equal to MR3. At P4, AR4 is equal to MR4, and at P5, AR5 is equal to MR5, and at P6, at price 6 rupees or price 6, AR6 is equal to MR6. Abhi equilibrium point kaun sa hai, that I have to see over it. Okay, just try to understand the diagram. In this diagram, I have taken quantity on x-axis, price on y-axis, and after that, I have plotted the graph of short-term marginal cost, short-term average cost, and average variable cost. अभी इसका behavior देखिए. All these three curves are U-shaped, owing the law of variable proportion. उसका law of variable proportion vary होता है, means what? To certain extent, these are all are decreasing. देखिए सब cost, सब की1, ये देखिए पहले highest थी, उसके बाद ये नीचे जा रहे हैं, और टू सर्टेन लेवल इट विल गो डाउन एंड आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट इंक्रीज. इन द सेम मैनर ये भी करो. देखिए पहले हायर था, उसके बाद डिक्रीज होगा, डिक्रीज होके 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 वो क्या होगा, फिर इट विल स्टार्ट इंक्रीज. द नेक्स्ट कर्व इज आल्सो डिक्रीज होगा, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होके नीचे आएगा, आफ्टर सर्टेन लेवल इट विल स्टार्ट इंक्रीज. गेटिंग दिस? सो दिस इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. मींस व्हाट? Your cost curves are not steady. They are not to the increasing order or they are not to the decreasing order. वो क्या करेंगे? To certain extent decrease होगे, एक peak point आएगा और उसके बाद increase होके चले जाए. Getting this? So इसको बोलते हैं short term law of variable proportion. Okay. Now, all these curves are U-shaped owing to the law of variable proportion. We may know that what would be the firm's average cost, marginal cost, and average variable cost. ये सारे cost है in any Q in short run for SAC, SMC, and AVC curve. हम लोगों ने 3 curve दिखाए हैं. On the other hand, AR and MR curves of the competitive firm would be identical. AR curves and MR curves यानी average revenue curve and marginal revenue. जितना भी मेरा marginal revenue रहेगा वही मेरा average revenue भी रहेगा. Because I am in perfect competition. So AR curves and MR curves will be same, and these are going parallelly with respect to Q axis or X axis. सारे curves आपके parallelly जा रहा है. Means what? बाकी 3 जो curve है SMC, SAC and AVC, ये क्या हो रहा है? Law of variable proportion से vary होते हैं. लेकिन मेरा AR MR curve और AR सारे AR curve and सारे MR curves, what they are doing? They are going parallelly to X axis. They are going parallelly to X axis.
So AR and MR curve of the competitive firm would be identical, and this curve would be horizontal straight line at the level of ruling the market price. तो market price से क्या हो जाएंगे, vary हो जाएंगे, but they will vary parallelly to the x-axis. When the price of product is P1, the firm's AR is equal to MR curve, which will show MR AR equal to, if price of firm is P1, at that time MR and AR will be equal, and there is no difference. 1 minute. So there is no difference between AR curve and MR curve. Both are same. क्योंकि मेरा एक्चुअल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में कुछ फर्क नहीं रहेगा, because whatever I am earning, because my profit, my price level will be very less. जो कुछ कॉम्पिटिटिव, जो कुछ मार्केट में प्राइस डिसाइड हो जाएगी, उसी प्राइस को मुझे प्रोडक्ट बेचना है. That's why my average revenue curve and my marginal revenue curve will not be different. So both will be same. That's why at price P1, my AR curve is equal to MR. AR1 is equal to MR1. At price P2, AR2 is equal to MR2. At price P3, AR2 is equal to MR3. AR3 is equal to MR3. In the same manner, at various prices, my average revenue and marginal revenue will show their graph. Okay. After that, we have got the E1, E2, E3, E4, E5, and E6. So these are called as E stands for equilibrium position. ये यानी क्या है, हम लोगों को equilibrium position जाननी है, इसमें शॉर्ट टर्म पीरियड में. तो E1, E2, E3, E4, E5 क्या है, हमारे equilibrium positions. At various prices, अलग प्राइस चेंज कर दिए तो मेरा equilibrium पॉइंट भी चेंज हो जाएगा. So equilibrium at quantity. At price 6, how much quantity I have to produce to get at equilibrium position? Q6, यानी quantity 6. अगर price 5 रहेगा तो equilibrium point कितना रहेगा? Quantity 5. अगर price 3 किया तो equilibrium point कितना है मेरा? That is Q3. Getting this? So in the same manner, I have to find the equilibrium position at various prices. Okay, see here. On the other hand, AR and MR curves of the competitive firm would be identical, and this curve would be horizontal straight line. अभी ये हम लोगों ने देखा कि AR and MR curve are going parallelly, and बाकी वाले SSC, SMC and AVC curve are showing their behavior. When the price of product is P1, the firm's AR and MR curves is the in line with AR and MR. Hence, at point Q, the firm's AR and MR would be P1 is equal to constant. The prices क्या है? Constant. So see here. So in this way, we have to find the equilibrium position. So E1, E2, E3, E4, E5 जो दिख रहे हैं हम लोग को, that is the equilibrium point in the short run equilibrium at various prices. So with respect to your price, I have to find the equilibrium position. Getting this? So this is something about short run firm equilibrium under perfect competition. Clear about this? So what you have to explain? First, this is the behavior of three graphs, that is the SMC, SAC and AVC. SMC यानी short run marginal cost. SAC is the average short run average cost, and it is the average variable cost. Getting this? And here I don't have scope to generate higher profit because I am in perfect competition and I am in short run business. That's why my average revenue curve and my average marginal curves will be same, because I don't have scope to generate the supernormal profit. So I have to generate the minimum profit. That's why my average revenue curves and marginal revenue curves are similar, and it will go with respect to your parallel with respect to your x-axis. Getting this? So in this way, we need to decide the equilibrium position under short run competition. Clear about this? So अगर क्वेश्चन इसके ऊपर रहा तो ये ग्राफ बनाना है और ये ग्राफ को एक्सप्लेन करना, कितना मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है. मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट हर एक प्राइस को अलग अलग है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. माय इक्विलिब्रियम पॉइंट एट प्राइस P1 is E1.
अगर प्राइस P2 हुआ तो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बढ़ चेंज होगा, प्राइस P3 हो गया, मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट भी चेंज हुआ, प्राइस P4 के लिए मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट अलग है, यानी हर एक प्राइस के लिए मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट अलग अलग होगा, मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट अलग अलग होगा. That is you have to explain. Okay, so students, let us stop here. See you to the next lecture. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir.